ठीक है, thank you very much, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the monthly webinar of Pakistan Physiological Society. The topic of today's webinar is pathophysiology of endocrine disorders. As per routine, we will begin our session with the recitation of Holy Quran. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Al-Qari'ah. The striking calamity. Mal-Qari'ah. What is the striking calamity? وَمَا أَدْرَاكَ مَا-Al-Qari'ah. And what can make you know what is the striking calamity? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. It is the day when people will be like moths, dispersed. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. And the mountains will be like wool fluffed up. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Then as for one whose scales are heavy with good deeds, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. he will be in a pleasant life. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. But as for one whose scales are light, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. his refuge will be an abyss. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. And what can make you know what that is? نَارٌ حَامِيَةٌ. It is a fire, intensely hot. Now, please, it is requested to please rise for the honor of National Anthem of Pakistan. Thank you very much. We'll see for one. वो देखो your screen pause. अब 0 करके करना है इसे. चलो बिस्मिल्लाह. Thank you very much, sir. Now, for introductory remarks of today's webinar, I'll request Professor Dr. Maril Khan, the President of Pakistan Physiological Society. Sir, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. So this is a wonderful analogy that this is our 9th seminar which we are holding. We started in January 2023, and it will be culminating in the 10th month into our physiology conference. So this, I hope these 9 months of webinars will prove fruitful for the coming conference, inshallah. And I welcome you all, Professor Rashid Mahmood Saab, Professor Adnan Khan Purwala, Professor Fatima Ehsan, Professor Maimuna Shafiq, Professor Ghazala Jawad, and Professor Sidra Hamid. And I won't be wasting much time because we know each other very well now.
And I would request now to proceed, please. Yes, our first presenter is Professor Adnan Kanpurwala. He's Professor of Physiology, Head of the Department of Physiology at at Karachi Institute of Medical Sciences, NUMS Karachi. He's a renowned physiologist and diabetologist. He's going to speak on a very interesting topic that is unraveling the complexities of diabetes, insight into etiology, diagnosis, and management. Welcome to the session, sir. Please, you can start your presentation. Assalamu alaikum, everyone. Am I audible to all? Yes, please. Thank you so much. And first of all, I'm very much thankful to Professor Umar Saab and PPS for organizing this event and inviting me to this prestigious event. It's an honor for me to be a part of this intellectual activity. And my today's topic is about diabetes. And believe me, it won't be justified just to give 15 minutes to this huge complex topic, जिसके बारे में हम आज भी कहते हैं कि जी still we are unable to understand the diabetes fully. So वही बात है जो दरिया में कूदे को बंद करने की बात होती है. Still we will try to go through it, the important concepts starting from the basic prevalence to etiology to management की तरफ हम बात करेंगे. So not wasting any further, हम बात करें and most important endocrine disorder, which is diabetes. Most of the cases which come to our clinic is endocrine, is related to endocrinology, diabetes mellitus, and then the second one is thyroid. ये वो चीजें जो हम बहुत ज़्यादा commonly देख रहे होते हैं. It's very important. That's why that students, graduates, physicians, they must know well about this and know about it. Why we are so much keen कि जी क्या है डायबिटीज, क्यों है और कितनी इम्पोर्टेंट है, इसका अंदाजा हमें कैसे लगा सकते हैं. कैन एनीवन शेयर इन द चैट बॉक्स एनीथिंग अबाउट द प्रिवलेंस ऑफ डायबिटीज? क्या प्रिवलेंस, दुनिया में कितने लोग इस वक्त डायबिटीज से मुतासर हैं? एनी आइडिया टू एनीवन? You can share it in the chat box. Any rough estimation? Okay, Ji. So if we say in the world, in the adult age from 20 to 79 years is 537 million people, like 9.3% population approximately are suffering from diabetes. और अगर हम बच्चों की बात करें तो again it's not low, it's 19 million. अच्छा, बच्चों में जब हम बात करें, obviously I assume कि जी when you talk about type 2 diabetes, although they are now recent guidelines कहते हैं कि there are 6 different types of diabetes, but it's getting stick to the basics. हम कहते हैं जी most important, we talk about 3 main types of diabetes. Type 1 diabetes where there is insufficient beta cell to produce insulin, चाहे वो बर्नआउट हो गए हो, कोई और etiological disorder हो गया, insulin deficiency, इंसुलिन ही मौजूद नहीं है, which is needed for the entry of glucose in most of the cells. Then there is type 2 diabetes, in which there's the most important issue is the utilization of that glucose, which is present in our blood, which comes as a process of digestion. उसकी यूटिलाइजेशन के लिए इंसुलिन रिक्वायर्ड होता है, तो इंसुलिन तो मौजूद है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा बिकॉज देयर अदर फैक्टर्स इज अफेक्टिंग, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द इंसुलिन रेजिस्टेंस. So insulin resistance ना होने की वजह से glucose uptake नहीं होता, and then the blood glucose level increases and it leads to hyperglycemia. So assuming that people know about the basics, so मैं थोड़ा सा चीजों को आगे more important concepts की तरफ लेके चल रहा था. And the third important part is gestational diabetes. What is gestational diabetes? That if a woman during the pregnancy develop diabetes in the second trimester, then we call it gestational diabetes. तो इसलिए जरूरी है कि उसको पहले से diabetes ना हो. हाँ, during प्रेगनेंसी पहले कभी डायबिटीज हुई होगी, ठीक हो गई, फाइन. लेकिन अगर उसको पहले कभी डायबिटीज नहीं चल रही थी, प्रेगनेंसी के बाद उसको सेकंड ट्राइमेस्टर में हमने चेक किया, फिर उसको डायबिटीज आई, नाउ दिस विल नोन एज जेस्टेशनल डायबिटीज, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बेबी शुगर भी कहते हैं लेमन टर्म में. So one is gestational diabetes, one is type 2 diabetes, which is insulin resistant main factor. Then later on, it is accompanied by lack of insulin as well. Usually ये adult में होती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 537 million people are suffering from it. And the third one, the type 1 diabetes,
जो कि और रेयर होती है पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली, और कम है जो कि अर्ली एज में आती है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जल्दी आ जाता है, छोटी एज में आ जाता है, 3-4 साल के बच्चे इसके साथ प्रेजेंट होते हैं। एंड इट्स रियली डिफिकल्ट टू मैनेज इन बच्चों को, क्योंकि उनमें इंसुलिन ही नहीं है, तो ओनली मैनेजमेंट फॉर देम इज गिविंग देम द इंसुलिन, और वो बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल होता है, दे आर इक्वली सफरिंग, क्योंकि वो इतना बच्चे के लिए पेनफुल होता है कि इंसुलिन को प्रिक करना, तो बिलीव मी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में डायबिटीज कितनी चल रही है, इज इट स्टिल द सेम, और बढ़ गई है, क्या हो रहा है दुनिया में? अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो इट इज एक्सपेक्टेड in the next 20 years 200 million people will more added to this number, like it would be 783 or 800 million people by the next 20 years. जैसे कि हमने पाकिस्तान में बात की, the prevalence of diabetes in Pakistan is 26.7%. Could you believe it? Like it's every fourth person in Pakistan is diabetic. That's the recent data. 5 साल पहले हम कहते थे कि जी पाकिस्तान जो है वो जो है टॉप 10 में था, फिर निकल के 13-14 नंबर पर आ गया, तभी पिछले 2 साल से ना सिर्फ टॉप 10 में आ गया बल्कि टॉप 3 में आ गया, और अभी रिसेंट डाटा के मुताबिक विद द स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग प्रिवेलेंस इंसिडेंस जिस तेजी से बढ़ रहा है, वी आर ऑलमोस्ट एट नंबर 1 इन द वर्ल्ड टू गेटिंग न्यू केसेस ऑफ डायबिटीज, दिस इज so much. So is it really something as bad happened कि लास्ट 4-5 साल में हमने इतनी तेजी से प्रिवेलेंस किया है कि हम 8% पर थे और हम सडनली 26% पर आ गए? So is there any change in our dietary style, in our factors, या कोई और वजह भी है? So one of the reason is no doubt कि जी obesity बढ़ गई है, stress level बढ़ गया है, लाइफ स्टाइल वैसी नहीं है, खाना पीना वैसा नहीं है, जंक फूड का बहुत रह गया, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ज्यादा है, स्मोकिंग ज्यादा है, ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड अनदर फैक्टर इज अवेयरनेस। Previously, there was no local data available which could show कि जी डायबिटीज की एक्चुअल प्रिवेलेंस क्या चल रही है। जब लोकल डेटा हमारे पास आना शुरू हुआ, कुछ कोहॉर्ट स्टडीज पाकिस्तान में हुई पिछले 3-4 सालों में, पंजाब में, एक सिंध में, वहां पे उन्होंने ह्यूज इस डेटा कलेक्ट किया, थाउजेंड्स ऑफ लोगों का, फिर वहां पे पता चला कि जी वी हैव सच अ ह्यूज प्रिवेलेंस जो कि हमें पता ही नहीं था। Or most importantly, another very what I could say is not a good thing that 50% of these people don't know that they have diabetes. More than like half of these people. So again, लोगों को diabetes है and they are unaware that they are having diabetes. तो जब पता नहीं होगा तो फिर how they are going to manage it. So why we are so much ठीक है जी डायबिटीज है, सही है, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है? 25% लोगों को हर 4 में से एक है, तो क्या कुछ फर्क पड़ता है इससे? क्या इज इट गोइंग टू अफेक्ट द सोसाइटी, इज इट गोइंग टू अफेक्ट आवर हेल्थ? ठीक है, इतने सारे लोगों को डायबिटीज है, मुझे भी हो गई, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? डायबिटीज इज नॉट दैट सिंपल एज इट seems to be. It seems like what is the leading cause of death in type 2 diabetes, अगर हम बात करें ना, तो we could understand कि जी importance क्या है इसकी। सो इफ यू कुड थिंक अबाउट कि जी डायबिटिक पेशेंट शुगर से कभी नहीं मरता इटसेल्फ, ठीक है ना, दूसरी चीजें होती हैं जो कि कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती हैं, जिनकी वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर होती है, मोर्टेलिटी बढ़ती है। एंड वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन दीज पेशेंट इज heart, yes, cardiovascular disease. Diabetic people are known to die at an early age. Usually 10 साल पहले वो एक healthy non-diabetic patient से 10 साल पहले उनकी mortality हो जाती है. So they die younger than non-diabetic patients. So you could see the impact it could have. तो आपकी जिंदगी के 10 साल कम हो जाते हैं जब आपको डायबिटीज हो जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द डिजीज करेक्टली सो दैट यू कैन एंजॉय द लाइफ एज द अदर पर्सन इज। Then it's not only the heart. There are other factors as well which are getting affected with diabetes, like stroke, blindness, kidney failures. तो ये सारी चीजें हैं जो कि कर रही हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या करना है? 25% पॉपुलेशन अगर हमारे डायबिटिक है, तो इमेजिन कि ये 25% पॉपुलेशन को जब ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगी, तो where they will land up into the tertiary care. Do we have that much budget? Do we have that much hospitals available कि हम ये सारी चीजें करें? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जी वेल टाइमली पेशेंट्स डायग्नोज हो, मैनेज हो, ताकि ना सिर्फ मोर्टेलिटी कम कर सकें बल्कि जितना अरसे भी वो जिंदा रहता है
क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप मेंटेन कर सकें। मरीज अक्सर कहता है कि जी डॉक्टर साहब मरना तो है, खा पी के मरे। भाई ठीक है, मरना तो है, लेकिन वो आप चलते फिरते अच्छी हेल्थ के साथ मरते हैं या आप बिस्तर पे पड़े पड़े कॉम्प्लिकेशन के साथ उस टाइम तक पहुंचते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पेशेंट को ये अवेयरनेस देना कि जी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बड़ी मुतासर हो जाती है इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ दिस डिसऑर्डर्स। तो टाइप्स के ऊपर जैसे कि अभी हमने बात की, एंड देन इटियोलॉजी के ऊपर हम बात करते हैं। इट्स डायबिटीज इज अ मल्टी फैसेट डिसऑर्डर। जेनेटिक, हमें मालूम है किसी भी डिसऑर्डर के लिए दो मेन एस्पेक्ट हैं, जेनेटिक पार्ट एंड द एनवायरमेंटल पार्ट। जेनेटिक पार्ट, मोर देन 100 जीन्स आर सो फार डिस्कवर्ड जो कि डायबिटीज में अपना रोल प्ले करती हैं, चाहे वो टाइप 1 हो टाइप 2 हो। एंड अगेन एनवायरमेंटल पार्ट में हमें मालूम है कि देयर आर सो मेनी एनवायरमेंटल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट, जो कि आपके रिस्क को बढ़ा देते हैं। एंड अगेन जब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी के पीछे बात करते हैं, रिस्क फैक्टर्स के ऊपर अभी मैं आता हूँ, अगर हम पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर बात करते हैं कि जी हो क्या रहा है, तो अगेन देयर मल्टीपल फिनोमेना व्हिच आर गोइंग ऑन एंड स्टिल साइंटिस्ट आर नॉट श्योर आर दीज द ओनली वन और दे आर मोर। डे बाय डे व्हेन वी कम अप विद न्यू रिसर्च इट कम टू जी ये भी फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं और इसकी पैथोफिजियोलॉजी में रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर है, जो कि हाइपरग्लाइसीमिया करवा रहे हैं। एस वी कुड सी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट is कि जी इंसुलिन की सीक्रेशन कम हो जाती है। ठीक है, इनिशियली तो सीक्रेशन बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो जब वो हाइपर सीक्रेशन कर रहा होता है तो फाइनली बीटा सेल्स बर्न आउट होने लगते हैं। सॉरी, एंड इट इज एस्टिमेटेड कि जी बाय द टाइम, यूजुअली क्यों हमारे स्क्रीनिंग डायग्नोसिस लेट होती है, तो बाय द टाइम अ पेशेंट कम टू अ डायबिटिक क्लिनिक इन अ डेवलपिंग कंट्री, उसको ऑलरेडी 10 years हो चुके होते हैं उसकी डायबिटीज को, और उसके 50% बीटा सेल जो है वो बर्न आउट हो चुके होते हैं। And the remaining 50% beta cells are burning out at a rate of 4% per year. So imagine like after next 10 years, on an average, most of the patient, they don't have the beta cells available to secrete their own insulin. So they need some exogenous insulin to cover their hyperglycemia. सो पेशेंट को ये डे वन से बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको एजुकेट करना कि डायबिटीज होती क्या है, और उसको मैनेजमेंट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग विच कुड हेल्प यू इज इंसुलिन। हम क्या करते हैं कि पेशेंट में इतना हमारे इंसुलिन का फेयर है कि वो उस तरफ जब टाइम होता है जब लाने का, तो वो आने को तैयार नहीं होता। वो फिर मजीद कुछ अरसे जब चीजें और खराब रहती हैं तो वो और कॉम्प्लिकेशन कराती है। तो आप डे वन से पेशेंट को एजुकेट करना शुरू करें ताकि बाय द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स जब उसको जरूरत हो तो वो फुली मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि हाँ दिस इज समथिंग विच इज बेस्ट फॉर मी एंड देयर इज नो अल्टरनेट सो फार फॉर दिस थिंग, और वो इजिली उस पर शिफ्ट हो सके। तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो कि हमें अपनी कम्युनिटी में अपने फिजिशियंस को, अपने स्टूडेंट्स को देना है कि जिनको डे वन से आपने एजुकेट करना है अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोज। So in this slide you could see there are multiple cause pathophysiology which is going on. Incretin का effect बहुत ज्यादा आता है, like again it is said कि जी GI hormones a very important role। हमें मालूम है कि जी whenever we eat incretin, GLP GIP secretes और वो जाके इंसुलिन की रिलीज कराते हैं बीटा सेल से, तो उनका इम्बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से अगेन हाइपरग्लाइसीमिया होता है। लिवर जो है लाइपोलिसिस बढ़ा देता है, अगेन हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है। किडनी हमें मालूम है कि जी थ्रेशोल्ड मौजूद है, 180 से ऊपर जाने लगता है तो वो किडनी को एसिड करने लगती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से। SGLT2 ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि उसको निकालने लगते हैं ग्लूकोज। लेकिन विद टाइम नेचर ने क्या किया है कि ये यूज टू हो जाते हैं, उनके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है, वो फिर ग्लूकोज को उतना नहीं निकाल जितना उन्हें निकालना चाहिए, तो उनका थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। तो अगेन जब थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है तो अगेन वो हाइपरग्लाइसीमिया करवा रहा होता है। ग्लूकोज अपटेक हमें मालूम है रेजिस्टेंस करा रहे हैं। सो देयर सो मेनी फैक्टर व्हिच अफेक्ट द पैथोफिजियोलॉजी, जैसे सारी चीज होती है। तो टू डू द बेस्ट मैनेजमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जी पेशेंट को आपने समझना है कि उसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी क्या चल रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सेटअप में हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम उसको बहुत बेहतर तौर पर समझ सकें। तो हम मोस्ट कॉमन चीजों को एज्यूम करते हुए चल रहे होते हैं कि जी इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड द इंसुलिन सिक्रीशन। और जो डाटा अब तक पाकिस्तान में हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट जो इनमें पैथोफिजियोलॉजी, द मोस्ट कॉमन पैथोफिजियोलॉजी जो हमारे यहाँ है पाकिस्तान में, वो डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक है, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंट। दैट्स व्हाई यू कुड सी कि प्रीवियसली हमने यहाँ जैसे प्रेवलेंस की बात की, पहले तो ओल्डर एज में ज्यादा लोग आ रहे होते थे, लेकिन अब यंगर एज ग्रुप में बहुत ज्यादा बहुत तेजी से पेशेंट आ रहे होते हैं। तो एज इज अ फैक्टर कि जी यूजुअली जो है 45-64 में ज्यादा होते हैं। वंस यू क्रॉस दैट एज तो आपकी जो रिस्क है वो 3 times इंक्रीज हो जाता है। बट नाउ डेज व्हाट वी आर सीइंग, पहले हम 10 साल पहले देखते थे कि 40s में लोग आते थे, अब 20s में लोग आते हैं। कुड यू बिलीव दैट? 20s में यंग बच्चे 21-22 साल के आ रहे हैं और जी उनको डायबिटीज हो गई है।
So again we need to look into it कि ये बहुत सारे factors हैं जो कि affect करें. Family history again is a very important. If you have someone in your family, siblings में, parents में, grandparents में, the gene is there in that, now you have to control it with the environmental factor. Otherwise वो trigger दब जाएगा और जो gene की जो bullet है वो express हो जाएगी and you will develop the diabetes. Race, ethnicity, again, it varies from race to race. Obesity, yes, 10 times more risk. People जो obese होते हैं वो ज्यादा risk पर हैं diabetes के उनसे. Physical inactivity, sedentary lifestyle, double the risk. जो लोग active नहीं है, double the risk. That's why we say it's very important कि जी आप exercise करें. कुछ नहीं कर सकते, simple walk 10,000 steps daily अगर आप लेते हैं. Like हमें अपने students को educate करना है if they are 18 or 20 years of age, and if they start taking 10,000 स्टेप्स अ डे, रिसर्च बताते हैं कि टिल द एज ऑफ 60 उनको कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर होने के चांसेस 50% से भी कम हो जाते हैं. तो कुड इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटी. अनहेल्दी डाइट, जंक फूड्स हमारे बढ़ गई, अगेन लीडिंग टू all these things. Gestational diabetes, again, baby sugar जो pregnancy में होती है, these women at a higher risk to develop diabetes later in their life. PCOS, polycystic ovarian syndrome, again female में insulin resistance करवाता है. Stress, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर सेटअप. मरीज कहते हैं जी मैं तो खाता पीता भी नहीं हूँ, लेकिन वो स्ट्रेस इतना है कि जो कि अगेन स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करवा रहा है, आपकी पूरी एंडोक्राइन मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रहा है और आपको डायबिटीज से ज्यादा एक्सपोज करा रहा है. So now the important part is okay, how do we diagnose it diabetes? What is the correct way? Most important thing that we should know कि जी फैक्टर्स कौन से जो कि कंफर्म कर सकते हैं. ठीक है जी. स्क्रीनिंग हम कहते हैं जी फास्टिंग ब्लड शुगर करें या रैंडम ब्लड शुगर करें. व्हेनेवर इफ यू आर एट अ हाई रिस्क, जो हमने रिस्क फैक्टर डिस्कस किए, इनमें से आपकी अगर लाइफ में ये रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं तो इट्स बेटर कि जी आप स्क्रीनिंग करते रहें. और आफ्टर द एज ऑफ 30 एवरी 6 मंथ वन शुड डू स्क्रीनिंग सिंपली बाय रैंडम ब्लड शुगर और फास्टिंग ब्लड शुगर. ये कंफर्म नहीं करेगा, लेकिन अगर वो नॉर्मल से ज्यादा आता है देन यू शुड थिंक अबाउट कि जी आप कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ चले जाए. फास्टिंग हम कहते हैं जी इट शुड बी बिलो 100 एंड रैंडम हम कहते हैं इट शुड बी बिलो 140. इफ द फास्टिंग इज बिटवीन 100 and 125 then you are pre-diabetic, and if the random is between 140 and 199 then again you are pre-diabetic. अगर आपकी फास्टिंग 126 या उससे ऊपर जाती है और रैंडम आपकी 200 से ऊपर जाती है देन यू हैव डायबिटीज. सिंगल रीडिंग पे हम कंफर्म नहीं करते, मल्टीपल रीडिंग्स होती हैं. अगर आप मल्टीपल रीडिंग्स आपने 2-3 दफा चेक किया, आपकी ज्यादा आ रही है, तो इट्स बेटर कि आप जाके HbA1c कराएं. इवन मैं तो कहता हूँ अगर सिंगल रीडिंग भी आपकी ज्यादा आई है ना देन यू शुड गो एंड चेक. रैंडम हम किसको कहते हैं, एटलीस्ट 2 आवर्स हो गए हो आपके खाना खाए हुए. ठीक है. फास्टिंग हम कहते हैं जी 8 to 10 आवर्स आपने कुछ ना खाया हो, दैट्स फास्टिंग रीडिंग. तो अगेन बात ये कि क्या अक्सर ऐसा होता है कि जी मरीज कहते हैं जी एक आध दफा ज्यादा आ गई, दूसरी दफा उसने जब चेक किया बिल्कुल सही आया, वो बेफिक्र हो गया. तो वो दूसरी दफा जो चेक करने पर सही आती है, अक्सर हम अपने आप को फूल बनाने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल अगर एक दफा ज्यादा आ गई रैंडम, उसने चेक किया, खाए पिए 3 घंटे हो गए तो उसकी 300 आ गई, उसने किसी ने कहा तुम फास्टिंग चेक करना, अब उसने रात का खाना स्किप कर दिया. ठीक है जी. या कहीं मेरी सुबह फास्टिंग ना ज्यादा आ जाए. अब जब वो फास्टिंग सुबह चेक करेगा 80 आ रही है, वो बड़ा खुश है कि जी मुझे शुगर नहीं है, उसने फिर से सारा कुछ मीठा खाना शुरू कर दिया. तो यहाँ पे ये होता है. ठीक है जी. अगर आप फास्टिंग रैंडम चेक करते हैं तो आप अपनी रूटीन डाइटरी हैबिट्स और लाइफ स्टाइल के साथ फास्टिंग चेक करेंगे. अगर आपको डाउट हो रहा है और आपने खाना पीना बंद कर दिया, उस दिन आप 2 घंटे चल गए, तो आपकी तो शुगर नहीं नीचे आना ही आना. इवन आप डायबिटिक होंगे तब भी वो नीचे आ जाएगी. तो ऐसे मौकों पे हम कहते हैं अगर आपकी कोई एक रीडिंग भी ज्यादा आ गई है एंड इफ यू आर नॉट श्योर कि जी मुझे है या नहीं है, इट्स बेस्ट टू गो विद द डायग्नोस्टिक टेस्ट. एंड उसमें जो है वो HbA1c ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन इज वन ऑफ द बेस्ट. वो आप करवा लें, वो आपके खाने पीने से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है एंड वो प्रीवियस पास्ट 3 मंथ्स की आपको एवरेज देगा. तो रीडिंग इज बिटवीन 5.5 and 6.5 then is pre-diabetic. Below 5.5 you are good to go, and above 6.5 आप diabetic वाली रेंज में आ रहे हैं. ये diagnostic confirmatory criteria है. अगर ये ज्यादा आ रहा है तो then yes there is a problem. ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यूजुअली डे टू डे हेल्दी इंडिविजुअल्स में जरूरत नहीं होती, प्रेगनेंसी में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो 3 मंथ्स का HbA1c वहाँ पे अफेक्ट नहीं कर रहा होता क्योंकि हार्मोनल चेंजेस सेकंड ट्राइमेस्टर में आती हैं. तो HbA1c वहाँ पे इतना अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. वहाँ पे देन एंड देयर हम ग्लूकोज की डोज देख के उसको देख लेते हैं कि जिसकी रैंडम शुगर कितनी आ रही है. तो GTT प्रेगनेंसी में उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस. अगेन इज अ वेरी गुड डायग्नोस्टिक टेस्ट. So it's very important to screen yourself early and diagnose early. क्योंकि जैसे मैंने बताया लेट डायग्नोसिस होती है, बीटा सेल्स बर्न आउट होना शुरू हो जाते हैं. बाय द टाइम यू कम अप टू द क्लिनिक 50% सेल्स ऑलरेडी डायग्नोस हो चुके होते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव द रिस्क फैक्टर देन डू द रेगुलर स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग. अपने रिलेटिव्स को उनको भी एजुकेट करें दैट दे शुड
screen it properly. जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं देन अगेन इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एंड पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच. हर डायबिटिक पेशेंट डिफरेंट है, हर एक का मैनेजमेंट प्लान डिफरेंट होगा एंड यू कैन नॉट ट्रीट देम ऑल अलोन. उसको मोस्ट प्रॉब्ली जब डायबिटिक पेशेंट है, हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है जी. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात करेंगे तो ना सिर्फ उसको शुगर, उसकी हाइपरग्लाइसीमिया होगा, इट मे हैव ब्लड डिक्रीज इंक्रीज ब्लड प्रेशर एज वेल, हाइपरटेंशन भी उसको हो सकता है, डिस्लिपिडीमिया भी उसको हो सकता है, यूरिक एसिड भी उसका बड़ा वो हो सकता है, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है. तो अगेन यू नीड टू असेस ऑल दीज थिंग कि जी पेशेंट को कोई और चीजें तो नहीं है, बिकॉज ये डायबिटीज एंड अदर मेटाबॉलिज्म विल आल्सो गेट अफेक्टेड. पूरा कार्डियो मेटाबॉलिक पैनल करवा के आप पेशेंट को देखते हैं ताकि उसको कोई और चीज है तो वो टाइमली मैनेज हो जाए और टाइमली उसको आप ट्रीट कर सकें ताकि कॉम्प्लिकेशंस को आप स्लो डाउन कर सकें. अच्छा जी. अगेन जैसे कि हमने बात की थी, कार्डियो प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वन ऑफ द लीडिंग कॉज डायबिटीज में इस कार्डियक है, ठीक है जी. जैसे कि हम कहते हैं किसी पेशेंट को एमआई हो जाता है देन वी डू स्पेशल केयर ऑफ दैट पेशेंट, जिसको कोई सेकंड एमआई ना हो जाए. डायबिटिक पेशेंट इज एन एट इक्वल रिस्क टू हैव एन एमआई जस्ट लाइक अ पेशेंट हु हैज ऑलरेडी हैव एन एमआई. इतना उसका रिस्क जो है 3 टाइम्स ज्यादा होता है नॉन डायबिटिक के मुकाबले में. तो कार्डियक सेफ्टी वन ऑफ द टॉप मोस्ट सेफ्टी डायबिटीज में हम बात करते हैं. when we talk about management, जैसे कि हमने बात की, we start with the lifestyle modifications में डाइट, एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट होता है कि जी आपने वेट को रिड्यूस करना है, एक्सरसाइज करनी है, डाइट करनी है. एक्सरसाइज का ये मतलब ये नहीं कि जी स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जस्ट डू सिंपल वॉकिंग. उसको अपने अपनी लाइफ स्ट्रीम में लेकर आए, एटलीस्ट 150 मिनट्स अ वीक आप वॉक करें स्लोली ग्रेजुअली एज पर योर नीड विद द कंसल्टेशन ऑफ योर फिजिशियन. इंक्रीज करते जाएं. डाइट में आप सिंपल अगर आपको बताना, उससे जी कहें कि जी कैलोरीज इनटेक कम करे, मीठा कम करे अपनी लाइफ में से, जितना वो खाता है 25% डाइट को सिर्फ वो कट डाउन कर दे तो उससे भी उसकी वेट रिडक्शन में और कैलोरीज में बड़ा अफेक्ट पड़ेगा. अगेन वो कौन से स्टफ हैं जो कि करते हैं, अगेन एक बिल्कुल डिफरेंट है कि जी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन इन सिंपल वर्ड्स ऑल दोस थिंग व्हिच टेस्ट मोर स्वीट उनको आपने अवॉइड करना है, चाहे वो फ्रूट्स हो, जूसेस किसी भी तरह के नहीं. फ्रेश फ्रूट जूस भी पेशेंट नहीं ले सकता, ठीक है. दिस इज, अब तो कहते हैं रिसेंट स्टडीज बताती थी हेल्थी पेशेंट को भी फ्रेश फ्रूट नहीं लेना होता, क्यों? उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है. फाइबर आपने निकाल दिया सारा, इमीडिएटली रश करके ब्लड में आएगा, आपको हाइपरग्लाइसीमिया कराएगा. और जो स्पाइक्स होती हैं, ठीक है जी, अब जो नया कॉन्सेप्ट आता जा रहा है कि जी आपने जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना है, थ्रू आउट द 24 आवर्स डे आपने उसको मेंटेन रखना है. जो स्पाइक्स आती हैं ऊपर नीचे जो होता है वो अच्छा नहीं होता. एवरेज आपकी अच्छी आ रही है लेकिन कहीं बीच में स्पाइक्स आ रही हैं, दे आर मोर डेंजरस. तो स्पाइक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. आपने वो कोई ऐसी चीज ली जो स्पाइक लेकर आएगा, दिस कुड बी मोर हार्मफुल. देन अगेन हम पेशेंट को एजुकेट तो जरूर करते हैं कि जी आप वॉक करें, डाइट करें, बट बिलीव मी दैट्स नॉट एन इजी थिंग. अ पर्सन हु इज हैविंग अ हैबिट ऑफ ईटिंग फास्ट फूड और वो रेस्ट एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल की उसकी आदत है, एक्सरसाइज नहीं करता, 40-45 साल की आदत है, यू एंड यू एक्सपेक्टिंग जी मैं एक दिन उसको 2 मिनट की काउंसलिंग करूंगा और कल से वो सबको छोड़ देगा, इट्स रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है ना. कुछ लोग होते हैं जो कि उसको बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग. लेकिन अगर हम अपनी यहाँ नेशन की बात करें, वी डोंट हैव दैट एप्टीट्यूड कि हम जी चीजों को समझ के फौरन इम्प्लीमेंट कर दें. हम वो लोग ही नहीं है, ठीक है ना, टू बी वेरी सॉरी टू से. तो हमें वो बार बार जब तक स्ट्राइक नहीं होता, पानी सर से नहीं गुजरता ना, तो नहीं होता. तो अगेन इवन वेस्ट में भी जो स्टडीज हुई हैं वो भी बताती हैं कि जी अगर आप पेशेंट को एजुकेट करना शुरू करते हैं अबाउट लाइफ स्टाइल, देन एटलीस्ट एक takes 3 years of multiple settings of education के वो जब उसके लाइफस्टाइल में वो चेंजेस आना शुरू होती हैं, उसकी हैबिट्स चेंज होना शुरू होती हैं. तो हमारे यहाँ तो और ज्यादा टाइम लगता है. तो इफ यू सीक दैट द पेशेंट इज अनेबल टू फॉलो द डाइट एंड द एक्सरसाइज, देन रादर देन कि हम शुगर को हाई रहने दें, इस बेस्ट के जी उसको हम साथ में मेडिकेशंस पे लेकर आना शुरू हो जाए. एंड दे आर सर्टन मेडिकेशंस अवेलेबल और नई नई टेक्नोलॉजी थेरेपीज आती जा रही हैं. Won't be able to go into the detail, just going to give you a quick glimpse कि with the in the past 50-80 years different medicines आती चली गई, starting from metformin, then secretagogue, sulfonylurea, then DDP4, then GLP incretins की जो हैं, and then SGLT2 and different insulins are available जिसमें short acting भी है, long acting भी है. Again it depends on the patient need कि किसको आपने क्या देना है. बेस्ट ड्रग की अगर हम बात करें, जस्ट टेक फ्यू सेकंड्स टू थिंक अबाउट कि जी अगर मैं कोई डायबिटिक की ड्रग लेता हूं तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उस ड्रग में. मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग आपके जहन में आएगा जी वो जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेरे कम करे. बिल्कुल परफेक्ट जी, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही है. उसके अलावा वो और क्या करे ब्लड ग्लूकोज के कम करने के अलावा?
जी वो ज्यादा कम ना कर दे, हाइपोग्लाइसीमिया ना करा दे। ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर 70 से नीचे चला जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स होते हैं। बिलीव मी, हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर ट्रॉमेटिक देन हाइपोग्लाइसीमिया। वो पेशेंट को अगर हाइपोग्लाइसीमिया के इवेंट्स होते हैं, मरीज कहता है जी मैंने डॉक्टर के पास ही नहीं जाना, मैं मीठा खा के 10 साल बाद मर जाऊंगा, हाइपोग्लाइसीमिया से मुझे आज आज नहीं मरना। तो सो डेंजरस। तो हाइपोग्लाइसीमिया को ना करे वो ड्रग, आपकी डोज मैनेजमेंट ऐसी हो, वो ड्रग ऐसी हो जो कि हाइपोग्लाइसीमिया मिनिमम कराती है। देन वी नो कि जी डायबिटीज वेट पे अफेक्ट करती है। तो अगेन आप चाहेंगे कि जी ऐसी ड्रग तो जो वेट रिडक्शन में हेल्प करे, ठीक है ना। अगर रिडक्शन ना करे तो कम से कम बढ़ाए भी ना, ठीक है जी। तो HbA1c को बेहतर करे, हाइपोग्लाइसीमिया ना कराए, वेट पे इम्पैक्ट ना करे। देन वी वांट कि जी वो ड्रग ऐसी हो कि जिसके साइड इफेक्ट्स मिनिमम हो, दूसरे साइड इफेक्ट्स भी ना हो। बल्कि हम तो चाहेंगे कि ड्रग ऐसी हो जो कि फायदे दे, शुगर के अलावा दूसरे बेनिफिट भी दे। जैसे कि जी वो मेरे कार्डियक सेफ्टी को बेहतर करे, वो मेरे ब्लड प्रेशर को बेहतर करे, मेरे कार्डियक रिस्क को कम करे। तो अब जितनी भी नई ड्रग्स आ रही हैं, FDA ने उनके ऊपर डायबिटिक ड्रग्स के ऊपर रखा है कि अदर देन मैनेजिंग डायबिटीज दे शुड नॉट गो फॉर द हाइपोग्लाइसीमिया। वो इतना ना कराती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कार्डियक सेफ्टी उनमें बहुत ज्यादा हो, तभी वो ड्रग अब अप्रूवल की तरफ आएगी। तो कार्डियक रिस्क को आपके कम करे, ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल को अफेक्ट करे, अदर साइड इफेक्ट्स मिनिमम हो। रीनल सेफ्टी के ऊपर बात हो रही कि जी आपकी डायबिटिक ड्रग रीनल सेफ्टी में आपको हेल्प आउट करे। एंड तो हम सिर्फ बात करें कि सिर्फ सेफ नहीं बल्कि बेनिफिशियल हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमने बात की थी कि पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच, कौन सी ड्रग लेनी है, क्या करना है, पेशेंट सेंटर अप्रोच। गाइडलाइंस डायबिटीज मैनेजमेंट पे नॉट गोइंग अगेन इनटू द डिटेल, इतनी कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। सिंपल जो आपने चीजें याद रखनी है डायबिटीज मैनेजमेंट में, हमें मालूम है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, तो आपने वो ड्रग देनी है जो कि रेजिस्टेंस पे अफेक्ट करे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो होती है वो मेटफॉर्मिन आप देते हैं जो कि रेजिस्टेंस को कम करती है, या पायोग्लिटाजोन अगेन आप देते हैं जो रेजिस्टेंस को कम करती है। देन अगर आपको लगता है कि जी बीटा सेल फंक्शनिंग नहीं कर रहे तो इंसुलिन सिक्रेटागॉग्स आप दे रहे होते हैं, जैसे कि सल्फोनाइल यूरिया आप देते हैं, वो हेल्प करती है। पेशेंट के अगर बीटा सेल्स काम नहीं कर रहे तो आप डायरेक्ट इंसुलिन को स्टार्ट करवा रहे होते हैं। अगेन इंसुलिन को कैसे स्टार्ट कराना है, अगेन वो एक डिफरेंट फिनोमेना है। व्हाट वी प्रेफर कि जी अगर ओरल ड्रग से काम नहीं हो रहा तो आप बेसल इंसुलिन से स्टार्ट करें और फिर आगे जाके आप बोलस इंसुलिन को ऐड ऑन करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो ड्रग के बारे में मैं क्विकली 1 मिनट में बताना चाहूंगा, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर एक ने याद रखना है। वन, द रोल ऑफ GLP, जो नई ड्रग्स आना शुरू हुई, जो इंक्रेटिन बेस्ड ड्रग्स हैं, ये बड़ा हेल्पफुल है डायबिटीज मैनेजमेंट में, स्पेशली उन लोगों में जो कि ओबीस है, क्योंकि ये वेट रिडक्शन करवाती है, ठीक है ना। ह्यूज वेट रिडक्शन में इनका रोल है। ओबेसिटी में अब FDA में ये अप्रूव कर दिया इंक्रेटिन को कि वेट रिडक्शन में यूज कर सकते हैं। तो कि डायबिटिक पेशेंट है, ओबीस है, देन दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस कि आप मेटफॉर्मिन के साथ इस ड्रग को ऐड ऑन कराएंगे, वेट रिड्यूस कराएगी, खुद ब खुद हाइपरग्लाइसीमिया को इम्प्रूव करेगी। अनदर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट GLP का है, इंक्रेटिन का है कि जी ये एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को स्लो डाउन करती है, तो अगेन आपके रिस्क को कम कर रही है। सो एक्सलेंट ड्रग। द ओनली लिमिटेशन है एक्सपेंसिव, इंजेक्टेबल है और एक्सपेंसिव है, बट अगेन द वर्क इज गोइंग ऑन एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर ओरल GLP हमारे पास आ जाएंगी। तो लेकिन excellent drug, if a person could afford it, obese है, तो then is a drug of choice for that patient in diabetes. The another drug जो कि पिछले 6-7 साल पहले आई है, SGLT2, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स। अगेन एन एक्सलेंट ड्रग कि ये किडनी के जरिए ग्लूकोज को एक्सक्रीट आउट कराती है एडिशनल, तो थ्रेशोल्ड को आपके कम कर देती है, इसकी वजह से ग्लूकोज जो है बाहर जाने लगता है। अब आप कहेंगे जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, नेचर भी करती है, ड्रग भी कर रही है, लेकिन देखा गया है कि other than maintaining the blood glucose level, this drug help in reducing the weight. Then this drug helps in reducing the blood pressure. This drug helps not only prevent managing the renal complications, बल्कि देखा गया है कि GFR को खराब तो नहीं करती, बल्कि जिन पेशेंट का GFR खराब होता है उसको बेहतर कर देती है। तो ऐसे पेशेंट में दिया गया जिनका GFR 40-45 था, इट वाज सरप्राइजिंग टू सी कि ट्रायल के बाद उनका GFR बेहतर हुआ। तो इट सच अ ग्रेट ड्रग कि जी GFR को बेहतर कर रही है। तो जी नेफ्रोलॉजिस्ट तो कहते हैं कि जी डायबिटीज की ड्रग तो बाद में है, ये पहले हमारी ड्रग है, एंड वी आर गोइंग टू यूज इट इन आवर रीनल पेशेंट्स। सिमिलरली कार्डिक में ये देखा गया कि उन पेशेंट पे भी दी गई जिनको डायबिटीज नहीं थी, क्योंकि थ्रेशोल्ड कम करती है। कम करने का मतलब ये नहीं कि जितना नॉर्मल से कम करते, 140-150 तक थ्रेशोल्ड को लेकर आ जाती रीनल थ्रेशोल्ड को।
तो अगेन नॉर्मल ग्लूकोज जिनका होता है उनमें भी इस ड्रग को देके देखा गया, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कराया उस ड्रग ने। दूसरा, कार्डियक सेफ्टी में इतना बड़ा रोल प्ले किया कि कार्डियक फेलियर वाले पेशेंट में हॉस्पिटल एडमिशन को इसने कम कर दिया, कॉम्प्लिकेशन को कम कर दिया, मोर्टालिटी को कम कर दिया बिकॉज ऑफ द कार्डियक फेलियर। तो इट वाज सच अ ग्रेट ड्रग कि जी कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि जी डायबिटीज होना इस ड्रग को हम वो देंगे। तो अगेन इट हैज सो मेनी बेनिफिट्स। तो अगेन इफ अ पेशेंट इज हाई रिस्क फॉर रीनल डिसऑर्डर, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, तो आपने इस ड्रग को फर्स्ट लाइन में आप एडीए और आईडीएफ ने और ईएसजी ने लेकर आ गए कि जी मेटफॉर्मिन के साथ आप इस ड्रग को इंक्लूड कराएं ऐसे तमाम पेशेंट में जिनमें ये एंड स्टेज कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं या हाई रिस्क पर हैं, ताकि वो कॉम्प्लिकेशन इनकी डिले हो जाए। सो वी हैव ऑल दीज ड्रग्स अवेलेबल। जैसे कि हमने बात की जीएलपी जो है, SGLT2 है, मेटफॉर्मिन जो है, एक्सलेंट ड्रग्स हैं। अगेन इट्स ऑल डिपेंड्स कि जी आपके पेशेंट की नीड क्या है, पेशेंट के उस हिसाब से आपने पेशेंट को मैनेज करना है और उसको मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच करना है। लाइफ स्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट, ओरल ड्रग कौन सी देनी है पेशेंट की, मॉर्बिडिटी, अदर क्या मॉर्बिडिटीज उसको हैं, हाई रिस्क इन चीज़ों पर है, इंसुलिन की कब ज़रूरत है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को आपने चेक करते रहना है। अक्सर क्या करते हैं कि हम सिर्फ HbA1c देख लेते हैं, जी वो 7 आ रहा है, आपने उसकी आरपीएस देखा 300 है, तो भाई आपने ये जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं इनको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज, फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। तो अब जो नया कॉन्सेप्ट आता जा रहा है जी, इसको रखें, उसके लिए अब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी भी आ गई हमारे यहाँ, अनफॉर्चुनेटली फुली अवेलेबल नहीं है। कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का है हमारे यहाँ, पार्शियल वो है, कंप्लीट कंटिन्यूस ग्लूकोज नहीं, हर वक्त वो ऑटोमेटिक नहीं देता, आपको सेंसर लगा के देखना चाहिए, एंड इट्स बिट एक्सपेंसिव, बट अगेन ऑल दोज हु कुड अफोर्ड इट, तो ओल्ड एज में और यंग एज में, एक्सट्रीम ऑफ एजेस में बड़ा अच्छा है कि प्रिकिंग कम हो जाता है। तो जिनमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है छोटे बच्चों में या ओल्ड एज में, उनमें अगर आप ये डिवाइस लगा देते हैं तो 15 डेज इसकी वैलिडिटी होती है। 15 डेज बाद आपको सेंसर बदलना पड़ता है, लेकिन उसमें आप सेंसर के करीब आप डिवाइस को लेके जाते हैं तो आप एवरी 5-10 सेकंड में आप विदाउट एनी ब्रेक आप उसकी ग्लूकोज लेवल को असेस कर सकते हैं। तो अगेन मैनेजमेंट में इसका बड़ा अच्छा रोल है। बाहर ऐसे डिवाइसेस 6-7 साल पहले से अवेलेबल हैं जो कि आपके मोबाइल पे हर 5 सेकंड में आपको रीडिंग्स देती रहेंगी, और ना सिर्फ आपको देंगी बल्कि आपके किसी रिलेटिव को भी देती रहेंगी। तो अगेन आपको है कि जी मेरे घर पे कोई ऐसा पेशेंट है जो कि फ्लक्चुएट कर सकता है, हो सकता है कि वो उसकी हाइपो में चला जाए, वो बता ना सके, तो आपके मोबाइल पे वो हर वक्त आता रहेगा। जैसे ही वो लो पे जाएगा आपका मोबाइल बीप करेगा, फौरन स्कूल फोन कर दें, घर फोन कर दें कि भाई ये इसकी शुगर लो हो रही है, फौरन इसको कुछ ग्लूकोज वगैरह दिया जाए ताकि वो ना हो। तो टेक्नोलॉजीज आर कमिंग इन, तो उनको जहाँ पे आपको जरूरत हो, जहाँ पेशेंट अफोर्ड कर सके उसको ऐड ऑन कराएं, एंड अगेन फ्लक्चुएशन को मिनिमम कराएं। फ्लक्चुएशन ना हो तो आपने डेली मॉनिटरिंग को पेशेंट को इंश्योर कराना है कि जो डेली मॉनिटरिंग करे, डिफरेंट डे पे डिफरेंट टाइमिंग्स पे करे। जिसकी शुगर अच्छी कंट्रोल में उसको कहें हफ्ते में 2 दफा करे, हफ्ते में 3 दफा करे, और अगर किसी की बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो तो दिन में भी 3 से 4 दफा भी करवाई जाती है। तो इट डिपेंड्स अगेन पेशेंट टू पेशेंट। So with that, I guess I conclude my session. The take-home message: patient-centered approach है, multidisciplinary approach है, and you need to ensure कि जी patient के levels range में हो ताकि वो अच्छी quality of life गुजार सके. With that, again I thanks to all the participants and the committee for inviting me for this presentation. Over to you, Sadia, please. Your very interesting and very informative presentation. So our next presenter is Professor Fatma Ehsan. She is Professor of Physiology and Head of the Department of Physiology at Islamic International Dental College, Rifa University. Her topic of presentation is the circadian rhythm and related sleep disorder. So ma'am, kindly please, you can start your presentation. Ma'am Fatma. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. And can you share my screen? Can you see my screen as well? Yes, ma'am. We can see your screen and we can hear you. Okay. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. My topic of today is very interesting. It is linked to our everyday routine, and I'll try to explain basic aspects of circadian rhythm and their interrelation of these biological clocks which are present. फातिमा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, प्लीज। सर ये मैं 3rd फ्लोर पे हूँ एक्चुअली, और सिग्नल्स की वजह से मैंने कैमरा भी नहीं इसीलिए ऑन किया।
मेरी आवाज आप देखिए, मतलब अब इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती। आ रही है मेरी आवाज? मुझे अभी तक अब तो बेहतर सर है। बहुत अच्छी आ इट रही इज थी। बेटर नाउ। इट इज बेटर। अच्छा चले, आई होप, बिकॉज आई एम सिटिंग इन द थर्ड फ्लोर। Sir, we'll discuss the circadian rhythm and some of the important. Now, the circadian rhythm, a key feature of life on Earth, is capacity to adapt to the environment. Most people around us, we all, not only humans, but all the species live on a 24-hour biological clock that is synchronized with the bodily heart production and natural life. Ma'am Fatma? जी जी। Hello, ma'am. Kindly check your connectivity, ma'am. We can't hear you. अच्छा, आप ऐसा करो, मैं फिर दूसरे रूम में मूव कर जाती हूँ, अगर आप किसी दूसरे स्पीकर को बुला लें पहले। मैम थोड़ी Is सी it बेहतर हो possible? जाती है बीच में, थोड़ी सी आवाज बेहतर हो जाती है। काइंडली उसकी डायरेक्शन चेंज करें, माइक की किसी तरीके से हो सकता है बेटर हो जाए। देखिए आपको आवाज बिकॉज़ एपिसोडिक है मैम, एक सादिया दफा मुझे ठीक हो बता जाती दें, है मैं फिर कितनी खराब हो देर कर जाती है। लेती हूँ। हाँ ये करने का फिर रोजाना जी मुझे बता मैं दें, फिर मैम रेडी। जी मैम, वी कैन रिक्वेस्ट डॉक्टर गजाला टू स्टार्ट हर ओके प्रेजेंटेशन। ठीक है, मैम मीनवाइल मैम फातिमा यू कैन प्लीज मैं रूम arrange शेयर your करती हूँ, रूम check your चेंज करती हूँ connectivity. अपना। ओके Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. So our next presenter is Dr. Ghazala Jawad. She is Assistant Professor of Physiology at Islamic International Medical College, Rifa University. She is going to speak on a very interesting topic again. This is the physiological basis of development of signs symptoms of Addison disease and Addisonian crisis. You can start your presentation, Dr. Ghazala. I'm sharing my screen. Yes, we can see your screen. Can you see my screen? Yes. Okay, can you hear me clearly? Yes, Dr. Ghazala, we can hear you. Please start. Bismillahirrahmanirrahim. The topic was pathophysiology of signs and symptoms of Addison's disease and Addisonian crisis. This is an abstract that I took from an article that is showing that a 22 years old man was admitted to an intensive care unit with sway, hyponatremia, hypotension, and somnolence. He had a 9 months history of weight loss and vomiting that had led to previous diagnosis of atypical anorexia and has been transferred from a psychiatric clinic. The investigation showed that there was generalized hyperpigmentation, dehydration was noted on physical examination, baseline concentration of plasma ACTH hormone, serum cortisol, plasma renin, and aldosterone were analyzed, and determination of antibodies against adrenal steroid 21 hydroxylase, measurement of a very long chain fatty acids, and thyroid function test was performed. On the basis of this, diagnosis of primary adrenal insufficiency caused by isolated autoimmune adrenalitis and adrenal crisis was made. So Addison's disease, what is it? It is basically a primary adrenal insufficiency. It is a rare chronic condition in which the adrenal glands don't produce enough of the hormones, cortisol and aldosterone. It affects 1 in 1 lakh people, and it affects people with 30 to 50 years of age. People having other autoimmune disorders like myasthenia gravis, type 1 diabetes, and Graves' disease, they are more at risk of developing Addison's disease. So causes are autoimmune, infections, and other. The autoimmune constitutes 75% of the cases. Infections, 25% cases are because of the tuberculosis, and rest are fungal and HIV. And other causes include metastatic cancers or hemorrhage. So in 25% cases which are because of the tuberculosis, the adrenal TB is secondary to genitourinary tuberculosis or other pulmonary or extrapulmonary tuberculosis, and even more rarely primary due to the reactivation of the disease. So in 75% cases, the autoimmune attack of adrenal cortex is the cause of adrenal Addisonian disease. In autoimmune disease, the identification of steroid cytochrome P45021 hydroxylase of adrenal cortex, it is the major autoantigen that has led to routine use of 21-OH autoantibody assay in determining the disease etiology. So this is the basic autoantigen that has led to the autoimmune destruction of adrenal cortex. I'm sorry, my slide is not moving. Let me check. It's stuck. Now it's fine. Autoimmune Addison's disease, although autoimmune Addison disease may occur in isolation, but more than half of the patients, they suffer from additional autoimmune diseases. Autoimmune thyroid disease or hyperthyroidism, this is the most frequent comorbidity.
followed by type 1 diabetes, chronic atrophic gastritis, and vitiligo. So any factor that lead of the above mentioned cases that lead to adrenal cortex function inadequacy, and adrenal function is inadequate to meet needs for cortical hormone, that leads to the deficiency of adrenal cortical secretions, which could be glucocorticoids, sex hormones, and mineralocorticoids. That leads to Addison's disease, and if not treated, it can lead to death. So three basic causes are the cause of Addison's disease, which are genetic predisposition, environmental factors, and adrenal cortex factors, which are intrinsic to adrenal cortex. So let's discuss first the genetic predisposition. The strongest genetic association to AAD are found within the certain HLA class 2 alleles, and several studies have reported that single nucleotide polymorphism in immune-related genes that can confer increased risk for AAD. So these are the list of the genes that in which the single nucleotide polymorphism can lead to the autoimmune adrenalitis. One is the cytotoxic T lymphocyte genes, CTLA4, that inhibits the T cell activation, PDL1 that inhibits the T cell activation, PTPN22 that regulates the T cell response to weak peptide agonists, which promotes toll-like receptors induced type 1 interferon, and then NALP1, which is an inflammasome activation, STAT4, which is involved in the T helper 1 and T helper 17 differentiation, CIITA, which is a regulator of MHC class 2 transcription, BACH2, and then FCL4. These are the genes, and if there is a single nucleotide polymorphism in these genes, that can lead to the autoimmune adrenalitis. There are factors which are intrinsic to adrenal cortex, which can lead to autoimmune disease. The factors are the adrenal cortex cells. They respond to inflammation by producing number of immunological mediators, including interleukin 1, 6, 8, and tumor necrosis factor. Moreover, they regularly interact with tissue-resident or patrolling dendritic cells and macrophages. Adrenocortical cells may contribute to the recruitment of self-reactive lymphocytes to the adrenal cortex. Third factor is the environmental factors. So this is a widely accepted and appreciated that in order for autoimmunity to develop, there is a need for genetic susceptibility and a precipitating event to occur for an inherent disease susceptibility, which is to be converted into an autoimmune disease. So under infections, which could be herpes simplex virus or cytomegalovirus, the parenchymal cells, they are exposed to various microbial products and cytokines that alter their status and their steady state dialogue with immune system. These changes are most likely instrumental to the development and progression of autoimmune disease. So this is the picture that is showing that the mechanism of development of adrenal insufficiency in Addison's diseases, basically this involves phase 1, phase 2, and phase 3. In phase 1, you can see that environmental factor or virus or any stress that can cause an exposure of autoantigen. So the translocation of self-antigen, which is 21-hydroxylase from the adrenal cortex to the nearby draining lymph nodes, is the key step initiation of autoimmune adrenalitis. This antigen transport and initial priming of T cells is most likely this is mediated by dendritic C cells, as you can see in this picture. So this then dendritic cells in phase 2, dendritic cells cause the initial phase of activation of dendritic cells in adrenal cortex may be followed by a phase of clonal expansion of autoreactive T and B cells and production of autoantibody producing plasma cells in draining lymph nodes. So in phase 3, once an immune response has been established against the adrenal cortex, destruction of adrenocortical tissue may follow according to a number of different mechanisms, which are shown that there is an IgA autoantibody destruction, there is a complement-mediated destruction, there is an granzymes and perforin-mediated destruction, or there is a destruction via free radicals or superoxides, which can be produced by activated macrophages or by the adrenal glands. So that is shown that there is direct cytotoxicity mediated by apoptosis-inducing cytotoxic T lymphocytes, either through perforin and granzyme B or by fast pathway, fast ligand and fast pathway. Or there is an activation of complement system or antibody-dependent cellular toxicity by autoantibodies bound to the surface of adrenal cells. Or there is a production of inflammatory cytotoxic cytokines and free radicals like nitric oxide superoxides by activated macrophages or adrenocortical cells themselves.
The histopathological picture in AAD is characterized by lymphocytic infiltration of adrenal cortex and extensive atrophy of parenchyma while the medulla remains intact. Over the course of years, the disease, when progresses, the integrity of cortex is gradually lost as 3 layers of cells are progressively destroyed, and that is replaced by the fibrous tissue. But despite the continuous loss of adrenal cortical cells, the autoimmune adrenalitis may remain subclinical until unless the 90% cortex is destroyed. So there is a 90% reserve of adrenal cortex for AAD to develop. So these are the signs and symptoms, which are weakness, fatigue, dizziness, dark skin, bluish black color around the nipple, mouth, rectum, scrotum, vagina, weight loss. There is fluid loss due to dehydration. So pathophysiology could be there is a weakness, fatigue, dizziness, and fluid loss. These symptoms and weight loss also, these are due to both hypovolemia and sodium depletion from mineralocorticoid and vascular collapse and anorexia from glucocorticoid deficiency. Dark skin, bluish black color around the nipples, mouth, rectum, scrotum, or vagina. ACTH, these symptoms occur because the ACTH and propionamilocortin, which is the precursor of ACTH, build up in a patient due to lack of cortisol-mediated feedback inhibition of ACTH and feedback inhibition of HPA axis. You can see there is a hyperpigmentation of the mucosa, tongue, and there is a hyperpigmentation of the feet. And this is caused by stimulating effect of excess ACTH on the melanocytes to produce melanin. The hyperpigmentation is caused by high level of circulating ACTH, which binds to the melanocorticoid receptors 1 on the dermal melanocytes. So ACTH and POMC that builds up in a patient due to lack of cortisol-mediated feedback inhibition of HPA axis. And this hyperpigmentation is the diagnostic criteria for Addison's disease. So elevated plasma ACTH as well as low serum cortisol level, they serve as the diagnostic criteria for AADs. So lack of appetite, muscle aches, upset, stomach upsets, vomiting, and diarrhea. These are also one of the symptoms. And these low-grade pyrexia also occur in patients with Addison's disease. These occur because the glucocorticoids, they play a central role in glucose metabolism, and they regulate energy storage and utilization through interaction with the sympathetic nervous system. An unappreciated effect of glucocorticoid is orexogenic. So when there is a cortisol deficiency in Addison's disease, that leads to anorexia in these patients and lack of appetite. So low-grade pyrexia may arise from dysregulated production of inflammatory cytokines, inflammation of GIT tract along with anorexia, and this is precipitated by lack of glucocorticoids. So another symptoms are low blood pressure, low sugar, and in women irregular or no menstrual period. The irregular and no menstrual period are because of the lack of the sex steroid hormones. The vascular tone is maintained by 3 factors. One is the adequate circulatory volume, cardiac contractility, and peripheral vascular tone. So glucocorticoids and catecholamines, they interact positively to maintain hemodynamic stability in humans by enhancing the catecholamine action in vascular smooth muscles. So low blood pressure and low sugar level are attributed to both hypovolemia and sodium depletion by mineralocorticoid deficiency and vascular collapse which is caused by the glucocorticoid deficiency. So there is a triad of diagnosis of Addison's disease, which is based on the appearance of telltale symptoms. So these symptoms are hyperpigmentation, fatigue, and salt cravings. These are the telltale symptoms of Addison's disease. So this is a flowchart that is showing that whenever there is an infection, sepsis, hypovolemia, or cardiac function, that leads to shock, and mineralocorticoid deficiency leads to total body water depletion. The deficiency of glucocorticoids can cause decreased intraadrenal catecholamine synthesis, decreased vascular sensitivity to catecholamine action, and decreased suppression of vasodilatory mediators. All these leads to the shock and loss of systemic vascular resistance and hypovolemia. So Addisonian crisis, it is a complication of Addison's disease, and it is known as adrenal crisis or acute adrenal insufficiency. It is an endocrinological emergency with the high mortality rates secondary to the physiological derangements from acute deficiency of adrenal hormones, particularly cortisol and aldosterone. The most common precipitating cause is an infection such as gastrointestinal upset, or there could be any infection. The Addison's disease may present first time for the Addisonian crisis as well. If undiagnosed, the Addison disease can present with an Addisonian crisis as well. So symptoms are hypotension, hypoglycemia, hair loss, back pain, fatigue, confusion, fever, loss of consciousness, vomiting, joint pain.
Circulatory shock is the cardinal feature of acute renal crisis and the precipitating event of the crisis itself. They frequently contributes to hemodynamic stress in the form of sepsis, hemorrhage, or cardiac dysfunction. The glucocorticoids, they're also required for the normal functioning of chromaffin cells and their capacity to produce adrenaline. So activity of phenylethylamine methyltransferase, it is a rate limiting step is in adrenaline synthesis. And it has been shown to be dependent on the glucocorticoids, which are transported via intraadrenal portal system. So when glucocorticoids are deficient, the catecholamines, they are also deficient. So glucocorticoid deficiency leads to circulatory collapse, reduced catecholamine synthesis, vascular desensitization to circulating catecholamines, and impaired cardiac contractility, which together with water and sodium depletion due to aldosterone deficiency represents the hallmark of adrenal crisis. So when adrenal gland is not functioning, what happens? The cortisol is very low and aldosterone is very low or absent. So low cortisol leads to liver function, decreased liver function, stomach and digestive function, they also decrease. Both these leads to low sugar and vomiting, diarrhea, and cramps. When aldosterone is low, the kidney and water loss occurs. There is an irregular heartbeat, there is decreased cardiac output. So both these factors lead to low fluid volume, low blood pressure, and vomiting and diarrhea and cramps, they also lead to low fluid volume. So low fluid volume and low blood pressure can lead to shock. So low sugar, when it goes to extreme hypoglycemia, it can cause coma and death. So diagnosis is established by demonstrating the low cortisol and aldosterone level, high renin level, and a blunted cortisol response with ACTH stimulation. So this is the summary that is showing the symptoms of adrenal crisis are weight loss, malaise, pre-syncope, syncopial episodes, confusion, GIT disturbance, salt cravings, hyperpigmentation. On examination, the patient can have hypotension, hyperpigmentation, particularly in the palmar creases, buccal mucosa, scraps, old scars, and around the nipples, and there is a septic source or fever, which could be because of the gastrointestinal, urine, chest, or viral infection. The lab findings will be showing hyponatremia, hyperkalemia, acute kidney injury from hypoperfusion. There could be a normochromic anemia, which is anemia of chronic disease, and hypoglycemia, which is in adrenal crisis. So these are my references. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Ghazala, for very detailed and informative presentation. The question answer session will be done at the end of the webinar. Now I would like to ask Ma'am Fatma, are you ready for your presentation? जी डॉक्टर सादिया मेरे ख्याल से ट्राई कर लेते हैं इंटरकनेक्टिविटी इशू है अभी चल सकता है तो ठीक है अदरवाइज मैम हम कर लें सर मैम कर लें आप देख लें yes ma'am we can see your slide and we can hear you. मेरी आवाज भी आ रही है आप लोगों को? आ रही है मैम आ रही है. चलिए अगर इंटरप्शन हुई तो आप मुझे बता देना ठीक है? जी मैम. So the topic today is circadian rhythm and related sleep disorders. Again, it's a very vast topic, so I've selected a portion of it regarding the circadian rhythm, and that is what are the sleep disorders which are specifically related to the circadian rhythm, especially the interrelation of these circadian biological clocks with our environmental cues and with the optimum body functioning. So what is circadian rhythm? Most people operate on a 24-hour biological clock that is synchronized with bodily hormone production and natural lighting. Ma'am Fatma, your voice is not clear. I've changed the position as well. मैम समटाइम ठीक हो जाती है आपकी आवाज और कभी बीच में फिर डिस्कनेक्ट हो जाती है. काइंडली प्लीज चेक कर लीजिए. नीचे आईटी वालों को भी बुलाया और उन्होंने कहा है जो ओवरऑल कुछ सिग्नलिंग का इशू हो रहा है. सो मैम किसी मैं रहने दूं फिर. मैम माइक की पोजीशन को एक दफा किसी स्टैटिक पोजीशन में रख के करें ट्राई. अच्छा चलिए मैं ट्राई करती हूँ. अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम राइट नाउ वी कैन हियर यू क्लियरली बट एपिसोडिक मैम बीच में चली जाती है. जी ठीक है बट आई एम नॉट मूविंग अराउंड. मैं स्टैटिक बैठी हुई हूँ एक जगह पे. चलो लास्ट ट्राई. यस मैम वी नो बट इट इज एक्चुअली समथिंग रिलेटेड विद माइक. चलिए जी.
Circadian rhythms are physical, mental, and behavioral changes that follow a 24-hour cycle. There are multiple physiological variables which exhibit these daily oscillations, such as the temperature regulation, hormonal levels, eating and digestion, our blood pressure, our sleep pattern, cognitive performance, and not to forget the cellular homeostasis as well. So understanding these circadian rhythms and how they work can be essential for maintaining a healthy sleep-wake cycle. And we will very shortly, briefly discuss how the circadian rhythms operate and how its abnormality may lead to various sleep disorders. Now, the signal transduction pathway. As the body transitions from light to dark, the melanopsin-containing retinal ganglion cells in front of the retina, they move through the retino-hypothalamic tract through the suprachiasmatic nucleus, which is the master clock of the brain found in the interior hypothalamus. And in adults, this clock resets or entrains every 24 hours based on the light and darkness cycle. From the suprachiasmatic nucleus, then it moves through indirect pathways to the pineal gland. The pineal gland is part of our endocrine system, which secretes highest melatonin at night and minimum during the day. Melatonin is the central regulator of sleep and circadian metabolism. When light signals are positive, the suprachiasmatic nucleus secretes GABA, which inhibits melatonin secretion, whereas when no light signal is secreted, in that case, it secretes glutamate, which then leads to melatonin release. However, it is also important to note that when it is continuously dark, for example, in blind people, this suprachiasmatic nucleus continues to generate this rhythmic output. The rhythm in that case deviates from the natural 24-hour solar cycle and free runs in the absence of important light cues. We will discuss what is a free running rhythm. So we have the central pacemaker, which is in the suprachiasmatic nucleus. And this central clock, along with that, we have multiple clocks in all the virtually peripheral organs, including the heart, liver, kidneys, lungs. They all have biological clocks inside them. So the central clock regulates and operates these clocks through hormonal and autonomic nervous signals, as well as the peripheral cues, including the sunlight exposure and our physical activity and our feeding status. So these environmental factors, they also directly affect the peripheral clocks. And since these organs, they have their own oscillatory pattern in which their metabolic activity varies, so that's why the proper and regular timings of eating, sleeping, that matters a lot. Now, moving on to the molecular mechanisms which underpin these, you can see the circadian oscillations. They are controlled by the products of the 4 circadian clock genes, which include the BMOL and the clock genes, and the cryptochrome and the PD. BMOL and the clock genes, they bind with the EPOX site after dimerization onto the DNA, and this then another set of genes, which is called the period and cryptochrome. The BMOL and the clocks, these are the positive regulators of transcription, whereas the cryptochrome and period genes, these are the negative regulators of transcription. Products of these genes, cryptochrome and period, form a complex that inhibits the activity of the BMOL and the clock proteins, thus downregulating or repressing their own expression. This forms a negative feedback loop system, a process that takes approximately 24 hours. And the current model connects these circadian clock genes and their products in a translation feedback loop system, which is a self-generated autonomous oscillatory pattern, in which at daytime, the BMOL complex clock proteins, they are at high levels, and at nighttime, the cryptochrome and the period genes, they are activated. So within a 24-hour cycles, this is an oscillatory pattern which is generated rhythmically. Now, the circadian rhythm disorders, formerly known as the sleep-wake cycle disorders, are problems that occur when your body's internal clock, which tells you when it's time to sleep or wake, is out of sync with your environment. Now, the key biological markers for determining a properly functioning circadian rhythm are the onset of melatonin levels, which occurs around 2 hours prior to our habitual sleep time, and the core body temperature minimum, which typically occurs 2 to 3 hours prior to our habitual wake time. And along with that, cortisol spike early in the morning, which gives a signal of alertness, that is also taken as a key biological marker. So the various circadian related sleep disorders involve, this means that the person has either difficulty falling asleep,
waking up during the sleep cycle or waking up too early and being unable to fall back to sleep. Treatment options include bright light therapy, medications, and behavioral therapy. Treatment choice also depends upon the disorder type and how much it affects your quality of life. Now, the classification of the circadian rhythm sleep-wake disorders have brought classified into intrinsic disorders as well as the extrinsic disorders. Intrinsic disorders are further subdivided into the delayed sleep phase disorder, advanced sleep phase disorder, pre-running disorder, and the irregular sleep-wake rhythm. Whereas the extrinsic or the behaviorally induced sleep disorders are the shift work disorders and the jet lag disorders, which are very common nowadays. Now, the delayed and the advanced sleep phase disorder. The delayed phase disorder occurs when a person's sleep-wake cycle is pushed back more than 2 hours beyond what is considered a typical sleep schedule. For example, if a person has to go to sleep at 11 p.m. at night, then he will be sleeping at 1 a.m. A delayed circadian rhythm can cause people to struggle with falling asleep at night and waking up early in the morning. People with this condition often suffer from lack of sleep if they have school or work obligations that require an early wake-up time. Many people with disorders have called evening chronotypes or the night owls, and its prevalence is common in young adults and adolescents. We have also seen normally that after childhood, when they enter into their teens, then they start to wake up at late nights. Now, the advanced sleep phase disorder is exactly opposite. The person tends to fall asleep and wake up more than 2 hours before their desired time. So if the wake-up time is 6 a.m. in the morning, then they would be waking up at 4 a.m. And advanced age is a major risk factor for this disorder, probably due to the degenerative changes in the suprachiasmatic nucleus desensitization, and also possible links to mutations in the period clock genes have been evidenced as well. So why we use light therapy in treating sleep disorders? Light exposure may induce phase advance or delays when applied at different times in the circadian cycle. For instance, in humans, light between 5 a.m. to 5 p.m. advances, and light outside this interval delays the circadian clock. Therefore, chronic light exposures at the wrong timing may induce phase shift of the circadian system, again, which is very common nowadays. And this leads to a circadian disruption, altering both cellular and organ function. And the melanopsin-containing retinol ganglion cells are extremely sensitive to blue light, and even exposure to light levels as the one which is being used for our smartphones or the light-emitting e-readers, they are also associated with the disruption of this rhythm. So how are we going to treat this disorder? The delayed phase disorder, we would provide them bright light in the morning and melatonin at least 2 to 3 hours before the desired sleep time to help them sleep early. And along with that, we will also prescribe exercise, morning exercise or afternoon exercise. Plus, we have to avoid heavy meals late at night, which again gave the signal to the brain that it is the active time. And for the advanced sleep phase disorder, bright light exposure in the evening for 1 to 3 hours and avoiding bright light until ideal waking time. This will help the person to sleep a little longer. And also evening physical activity will also help along with that, and taking a heavy breakfast in the morning. Now, what is irregular sleep-wake rhythm? This disorder is characterized by inconsistent sleep patterns without a stable rhythm or entrainment to day-night cycles. Symptoms are difficulties in sleeping, insomnia, and excessive daytime sleepiness. They are going to be the same in almost all the disorders. So multiple sleep-wake periods can occur throughout the day. Mostly these periods or naps occur before 6 p.m. in the evening. And a period with irregular sleep-wake with disorders, they also, people mostly have neurodevelopmental or neurodegenerative disorders like Parkinson's, Alzheimer's, and it is also very common in children with developmental disabilities. For further treatment, we will gradually decrease the number and duration of the daily naps and increase in the activity level and social interaction, which will facilitate the sleeping process. Now, what is non-24-hour sleep-wake rhythm disorder? This is also known as the free-running disorder, and it occurs when the internal clock does not reset every 24 hours. And as a result, the person's normal sleep period is constantly shifting over a period of days or weeks. Sometimes few weeks, they may be sleeping early at night,
and few other weeks they may be sleeping late at night. And this condition is again primarily affects the blind people. Eyes of a totally blind person cannot transmit as many light signals to the brain, leading to confusion about the timings of it. So the treatment includes in training for 24 hours a day for social interactions. Now, moving on to the behaviorally induced sleep disorders, we have the shift work disorders and the jet lag disorders. The shift work disorders, people whose jobs require them to work partly or completely at night or early in the morning often experience this shift work disorder. And individual tolerance to shift work varies among different individuals, depending upon their adaptation to the circadian rhythm, their sleep homeostatic influences, their age, type of shift schedule, as well as family support. And a recent European study found that the long-term night shift in females, this study was conducted in Greece. So long nighttime shifts in females was linked to irregular periods, endometriosis, and breast cancers. And they found altered expression of 4 clock genes in the endometrial tissue, indicating a disturbance of the biological timings. How are we going to treat it? For its treatment, people may benefit by use of blue light blocking goggles in the morning to delay their night sleep time. They can take short naps prior to the start of the shift, optimizing the sleep environment. For example, it should be completely pitch dark. There should be no noise, no caffeinated drinks in the evening or at nighttime, and adhering to to good sleep habits. For example, it should be a regular sleep wake schedule, and along with that, patient and family education. What is jet lag? So most people experience jet lag after flights that may pass over multiple time zones. And this represents a transition period during which a person's internal clock needs to synchronize with the local time. Jet lag symptoms typically begin 1 to 2 days after the flight and can persist for up to a week or two. And the severity of the system may depend upon the number of time zones crossed. And eastbound travel tends to produce more severe jet lag than westbound travel. For example, if a person is traveling from America to Pakistan, this is because humans can stay longer at night as compared to sleeping early at bedtime is more difficult. So in eastbound travel, there is advanced phase shift. So there is early resetting of the circadian rhythm as the person, they lose time. And the internal clock is shorter than the regular solar 24 hours. So besides melatonin, the person should be exposed to bright light close to the new ideal wake-up time, that is delaying morning exposure. Whereas in westward travel, for example, people moving towards from Pakistan to America, in that case, there is going to be a delayed phase shift. And in that case, the internal clock is longer than 24 hours and backward setting is needed. So limiting time earlier in the evening, so ideal bedtime can be achieved. So circadian disruption, the circadian rhythm disorders are common conditions with multifactorial contributions, including the genetic factors, as well as the behaviorally induced elements. Nowadays, resetting suprachiasmatic nucleus is more difficult due to inappropriately timed signals. Morphine erratic lifestyle, along with long flights across the multiple continents, shift work, and the recent online late night jobs, they may lead to a desensitization of our biological clock, which may result in abnormal endocrine responses. For example, melatonin suppression has been linked to various metabolic disorders, cancers, cardiovascular diseases, reproduction, endometriosis as mentioned above, dysbiosis, diabetes, obesity, depression, seasonal affective disorders, and bipolar spectrum disorders, and cognitive impairment. They all can be related to genetic as well as lifestyle. Hence, we need to lead a balanced life in alignment with nature. Will function metabolic as well as cellular homeostasis. That's all. Is that clear? I hope there was no hitch in between. Thank you very much, ma'am, for very interesting presentation. Now, our next in-line speaker is Professor Dr. Maimouna Shafiq. She's also a very fluent speaker. She is going to present pathophysiology, diagnosis, and management of grave disease
Dr. Maimuna, you can start. Just let me share the screen. Yes, yes, okay. I hope it's clear. No, we can't see your slide, Dr. Maimuna. Screen sharing यहाँ तो show कर रहा है कि screen share हो गया. Yes, we can see your slide. We can see your slide. Okay जी. Slide share कर दें, please. जी slide share कर दी मैंने डॉक्टर सादिया. वो slide जो है ना full slide पे चले जाए ना. ठीक है. अच्छा ठीक है. ठीक. full slide पे किस तरीके से लाएंगे? क्यों नहीं? अच्छा ये देख sharing. Just tell me आपको अब ठीक है? Is it clear now? Yes, oh, you can start. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thank you so much for having me over here. This is my obviously first presentation in the PPS, and a few of you know me, but many of you don't know me. So inshallah, as future endeavors honge, to I'll be here whenever you'll ask me to present anything. Thank you so much again for having me over here. So my presentation is on Graves' disease. We're going to present the okay. So I'm going to present a case, and then we're going to proceed how a physician can through this case how they can diagnose a case of Graves' disease. So Natasha, a 19-year-old A-level student, comes to an OPD with a complaint of weight loss that is almost 9 kg within the past 3 months, despite having a voracious appetite. She complains of nervousness, sleeplessness, palpitations, and irregular menstrual periods. She notes that she's always warm as compared to others. On physical examination, Natasha was restless and had a noticeable tremor in her hands. At 5 feet 8 inches tall, she weighed only 49 kg. Her arterial blood pressure was 160/85 and her heart rate was 110 beats per minute. She had a wide-eyed stare and her lower neck appeared full. These characteristics were not present in photographs which were taken 1 year earlier. Now, based on her symptoms, the physician suspected that she had thyrotoxicosis or increased circulating level of thyroid hormones. Laboratory tests were performed to determine the etiology of her condition, and in that 3T3, T4 were increased. Thyroid stimulating hormone was decreased or almost undetectable. Now, there are different questions related to this. We're going to discuss the physiological basis of her signs, symptoms. Like thyrotoxicosis is obviously suspected over here, and she has elevated level of thyroid hormones. So basically, the signs, symptoms which she was having are weight loss, heat intolerance, increased heart rate, increased pulse pressure, and increased arterial blood pressure. Now, what led to her weight loss? Obviously, thyroid hormone, they basically increase the basal metabolic rate. That is, oxygen consumption and nutrient consumption is increased. And that is, she is in a hypermetabolic state and she has that a voracious appetite, but still she is losing weight. Then there is heat intolerance. The heat intolerance is basically due to the increased oxygen consumption and which is producing increased heat in the body. The body's normal cooling mechanisms are insufficient to dissipate the extra heat which is being produced. So that's why she's always feeling hot or warm. Then there is increased heart rate. Thyroid hormones basically induce the synthesis of number of proteins. For example, they increase the beta-1 receptors in the heart, that is by upregulation of beta-1 receptors in the SA node, and that is going to increase the heart rate with a positive chronotropic effect. Then there is increased pulse pressure. Upregulation of beta-1 receptors in the ventricular muscle also increases the contractility and the stroke volume, which was seen as an increase in the pulse pressure. Then there is increase in arterial blood pressure. Both heart rate and the contractility are increased. So as a consequence, cardiac output was increased, and that is going to increase in the arterial pressure. So all these symptoms we've discussed up till now the physiological basis of these symptoms. Now, on the basis of T4 and TSH levels alone, primary hyperactivity of thyroid gland looks just like
factitious hyperthyroidism. Now, what is factitious hyperthyroidism? It is basically when someone is exogenously taking thyroid hormones which are not required by the body, and that could lead to weight loss. So now we're left with the question of whether Natasha had a hyperactive thyroid or whether she's ingesting exogenous thyroid hormones for weight control. The fullness in her neck suggested an enlarged thyroid gland, that is goiter, but we went for a more specific scientific measure of thyroid gland activity, that is we're going to go for the radioactive iodine scan. Now, iodine is taken by the thyroid gland by sodium iodide pump, and thyroid hormones are synthesized by the iodination of tyrosines on thyroglobulin. So one way to assess the thyroid gland activity is to measure radioactive iodine uptake. In her case, iodine uptake was increased throughout the gland, suggesting a uniform hyperactivity. So the functional hyperactivity of thyroid gland ruled out the diagnosis of factitious hyperthyroidism. If she would have been taking or ingesting exogenous thyroid hormone, iodine uptake would have been decreased by the thyroid gland. So because of the high level of thyroid hormone, suppressed thyroid gland activity, negative feedback on the pituitary gland. Then we have the triiodothyronine, that is T3 resin uptake test, which measures the binding of radioactive T3 to a synthetic resin. In the test, a standard amount of radioactive T3 is added to an assay system. Now, this assay system, it contains sample of patient serum and T3 binding resin. What is the rationale for this? The rationale is that the radioactive T3 will first bind to unoccupied sites on the patient thyroid binding globulin, and the remaining leftover is going to bind with the radioactive T3. That is the radioactive T3 resin, the remaining resin. So, the T3 resin uptake is increased when circulating TBG levels are decreased. For example, in liver disease, fewer TBG binding sites are available, or when endogenous free T3 levels are increased, that is, endogenous hormone occupies more thyroid binding globulin. Conversely, if resin uptake is decreased when circulating TBG levels are increased, for example, in pregnancy, or when endogenous T3 levels are decreased. Now, in our patient case, the resin uptake was increased. So what could be the possible explanation of this finding? The T3 resin uptake has two possible explanations. Number one is the TBG levels are decreased or the endogenous level of thyroid hormones are increased. So in Natasha's case, it was the endogenous level of thyroid hormone which were being produced more in number. So increased endogenous thyroid hormone from the hyperactive gland occupied relatively more binding sites on TBG. Thus, fewer TBG binding sites were available to bind to the radioactive T3. As a result, the uptake of radioactive T3 by the resin was increased. Based on her symptoms and laboratory findings, the final conclusion was that she had Graves' disease, and obviously the conclusion was made by the test which was related to the immunoglobulins. So Graves' disease, it is the most common cause of hyperthyroidism, and it is an autoimmune disorder which is caused by the production of abnormal circulating antibodies to the thyroid stimulating hormone receptors on the thyroid gland. This antibody, it was formerly called as long-acting thyroid stimulator, and it is now known as thyroid stimulating immunoglobulin. These antibodies, they stimulate the thyroid gland just like the thyroid stimulating hormone does, and it is going to cause increased synthesis and secretion of thyroid hormone. So you can see this over here that the thyroid stimulating hormone, normally when they're going to stimulate, they're going to produce the thyroid hormone, which is normal in amount. But over here, when these antibodies bind, they bind it there permanently, and they're going to produce large number of T3 and T4. Now, when comparing the tests done, that is the thyroid stimulating hormone, thyroid stimulating and immunoglobulins T3 and T4 free, you can see in this one, that is with the Graves' disease, both free T3, T4 were increased in large number, and the thyroid stimulating hormone was barely detectable. And then we have the thyroid stimulating hormone receptor antibodies were positive over here. So all of our symptoms and laboratory findings were consistent with the diagnosis of Graves' disease, that is increased radioactive iodine uptake, increased T4 synthesis and secretion, decreased thyroid stimulating hormone level, anti-TSHR was positive, and obviously the classic symptoms of thyrotoxicosis. So basically, there are three general approaches to the treatment of Graves' disease, that is removal or destruction of thyroid gland, inhibition of thyroid hormone synthesis with drugs,
or blockade of beta-1 adrenergic effects of thyroid hormone, which are dangerous because they increase in arterial pressure. So thyroidectomy is obviously a self-evident solution. Alternatively, physicians do give radioactive iodine in larger amount so that the thyroid gland can be destroyed. So surgery was scheduled for Natasha's thyroid gland, that is thyroidectomy was planned, but waiting for the thyroidectomy, 2 medicines were prescribed, that is propylthioresil and propranolol. Now, what is the rationale for giving these drugs? Propylthioresil, basically it is going to inhibit the peroxidase enzyme, which catalyzes all of the steps of thyroid hormone synthesis. And thiocyanate is a competitive inhibitor of sodium iodide pump in the thyroid gland. So both of them are going to decrease the synthesis of thyroid hormone. Then propranolol is a beta adrenergic antagonist that blocks the positive inotropic effect and positive chronotropic effect of thyroid hormone. High doses of intravenous immunoglobulins or corticosteroids can reduce inflammation and orbital congestion. Sometimes orbital decompression surgery and post-globular radiotherapy are also selectable treatment method for Graves' disease oculopathy, but their side effects limit their widespread use. Thank you so much. By this, I end my presentation. Thank you very much, Dr. Maimuna. Your presentation was very interesting. Now, this is the turn of our last presenter. She is Dr. Sidra Hamid. She's assistant professor from Rawalpindi Medical University. She's going to speak on a very interesting topic, that is pathophysiology of endocrine tumors. So, Dr. Sidra, you can start. Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sidra Hamid from Rawalpindi Medical University. I will give a brief presentation because of cognitive overload. Plus the topic is very detailed, लेकिन इसको थोड़ी देर में briefly cover किया जा सकता है. This is the presentation outline that what are neuroendocrine tumors, their incidence, deep pathophysiology, classification based on their functional nature, carcinoid syndrome and carcinoid crisis, diagnosis and management principles. Now, why neuroendocrine tumors are called neuroendocrine tumors? Because they arise from neuroendocrine cells. These cells are scattered throughout the body at various locations like intestine, like pancreas, like bronchi, thyroid glands. And they are clustered together as a group of tissue physiologically because of their nature. जब हम इनकी histological appearance देखते हैं tumors की और साथ इनके symptoms देखते हैं which depend on the secretion of chemicals such as biogenic amines and polypeptide hormones, तो फिर हम इनको एक group में consider कर लेते हैं. This is the diagram showing the histology of neuroendocrine tumor. इसमें secretory granules जो है ये आप देख सकते हैं. अब इनको why we are using the term neuroendocrine for these cells, इसलिए क्योंकि इनकी neurons के साथ similarity है because of the presence of their spore granules in them, जिसमें serotonergic और बाकी biogenic amines होती हैं, and endocrine because of their nature of releasing the hormones directly into the blood. अब ये वो sites हैं जहाँ पर जो है हमें neuroendocrine tumors मिल सकते हैं because of the neoplastic proliferation of neuroendocrine cells at these sites. foregut है, midgut, hindgut, ठीक है. History of these tumors, इसमें से कुछ tumors ऐसे हैं जिनको हम originally carcinoid tumors कहते थे. These were discovered in 1907 and were called carcinoid tumors इसलिए क्योंकि इनकी growth cancer-like थी, slow थी और ये benign होते थे. लेकिन later on it was identified in 1938 that they can be malignant. ठीक है. अब ये जो है basically incidence of these tumors है on the basis of primary location of the tumor. Bronchus, similarly stomach, small intestine, appendix और rectum. यहाँ के जो neuroendocrine cells हैं इनके अंदर neoplastic जो proliferation है as compared to other areas of neuroendocrine cells ज़्यादा है. Similarly, neuroendocrine tumors are more common in males. और ये एज के लेटर जो डेकेड्स हैं उसमें इसलिए इनका इंसिडेंस राइज कर जाता है because they are slow growing tumors. तो जब ये साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं
जो केमिकल्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी वजह से ये जब हाई सस्पिशन होता है तो इन्हें डायग्नोज किया जाता है। क्लासिफिकेशन वैसे तो हिस्टोलॉजिकली इनके डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, बिनाइन, मैलिग्नेंट, depending upon these are poorly differentiated or these are well differentiated cells, but here more जो appropriate है that is their functional classification. Functional neuroendocrine tumors and non-functional. Functional वो है which release hormones and other substances जिसकी वजह से symptoms आते हैं, and carcinoid syndrome is a sign of functional neuroendocrine tumors. Non-functional लेट वो है जो कि later on diagnosed भी नहीं होंगे because वो इतनी amount में hormone secrete नहीं करते कि वो sign and symptoms produce करें और उनको investigate किया जा सके. Usually इनके symptoms जो हैं जैसे cancer-like symptoms हो सकते हैं, जो general cancer के symptoms हैं, symptoms located to the site of the tumor and to the size of the tumor हो सकते हैं. और स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो कार्सिनॉइड ट्यूमर इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ फंक्शनल न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर जो कि यूजली स्मॉल इंटेस्टाइन के न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स के साथ प्रेजेंट करता है। ये ट्यूमर्स जो है बेसिकली सेरोटोनिन और इतनी ज्यादा अमाउंट में सेरोटोनिन रिलीज करते हैं कि दैट इट कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर, और वो जो बॉडी में एक्यूमुलेट होती है तो वो सेरोटोनिन ओवरलोड के जो है साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। इन एडिशन टू सेरोटोनिन कैटिकाइनिन, हिस्टामिन, कैलिक्रीन, प्रोस्टाग्लैंडिन, कैटेकोलामीन, मोडेलिन, ये वो सारे केमिकल्स हैं जो जब एक्यूमुलेट करते हैं तो ये रिस्पेक्टिव जो फिजियोलॉजिकल इनके साइन एंड सिम्टम्स हैं उनको एनहांस कर देते हैं। जो इनके एक्शंस हैं वो सिम्टम्स की फॉर्म में जैसे सेरोटोनिन वेसोडाइलेशन करेगी, इंक्रीज वाटर सोडियम क्लोराइड पोटेशियम सिक्रीशन करेगी तो इट लीड्स टू डायरिया, फ्लशिंग, पैल्पिटेशन। सिमिलरली हिस्टामिन जैसे एलर्जी में रिलीज होती है वेसोडाइलेशन करती है तो उसी तरह फ्लशिंग, टीजिंग, पैल्पिटेशंस जो है वो प्रोड्यूस करेगी। कार्सिनॉइड क्राइसिस कार्सिनॉइड सिंड्रोम की एक्सेजरेटेड फॉर्म है जब हम कोई ऐसा पेशेंट ऐसी कोई डाइट ले लेगा जैसे चीज ले लेगा, वॉलनट्स ले लेगा या एम्बोलाइजेशन सर्जरी होती है तो उसमें हार्मोन हाई लोड में जब बॉडी में रिलीज होगा तो इट कैन लीड टू कार्सिनॉइड क्राइसिस। Other complications carcinoid syndrome की it can lead to formation of plaques over the cardiac valves. In addition to that, tryptophan का overuse होगा तो niacin deficiency और प्लेटरा हो सकता है और tumor overload की वजह से जो है वो symptoms हो सकते हैं। Management principles जैसे पहले भी डिस्कस हुए कि reduce the hormone secretion and production, reduce effects of secreted hormones and control tumor growth. कीमोथेरेपी की जा सकती है, सोमैटोस्टेटिन एनालॉग्स दिए जा सकते हैं, एम्बुलाइजेशन सर्जरी की जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक केस। एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। Excellent. Thank you very much, Dr. Sidra, for a very wonderful presentation. Thank you so much. Now, this is the time for question and answer session. Respected colleagues, if you have any question, kindly please you can ask. Sorry, there is one announcement regarding these monthly seminars. As we all know, in next 3 months, in next month first is the PPS conference, and in November and December, most of the faculty is busy in the professional exams. So the next seminar will be, inshallah, series of seminar will start from January 2024. Inshallah. Over to Dr. Sadia. So any question, please? No. So now I request Professor Dr. Umar Ali Khan, the President of Pakistan Physiological Society, for distribution of shields and for the concluding remarks. Thank you very much all of you. आप लोग जो तशरीफ नहीं लाए आपको इंशाल्लाह भी ये शील्ड्स डिस्पैच हो जाएंगी। सिदरा मौजूद हैं, सिदरा को दे के इनकी तस्वीर हम बना लेते हैं। ठीक है। सर आपकी वीडियो नहीं हमें दिख रही, हम देखना चाहेंगे जब आप वीडियो ऑन करना भाई जरा। चलिए डॉक्टर साहब, नाउ वी आर विजिबल। यस सर, यस सर।
एक उधर से भी, उधर उसकी भी ले लेना, वहां जो सब नजर आ रहे हैं ले लो उधर से। प्रोफेसर सिद्रा, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्रेजेंटेशन, बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान कानपुर वाला साहब, प्रोफेसर बहुत शुक्रिया। फातिमा एहसान, प्रोफेसर मेमूना, प्रोफेसर गजाला, इंशाल्लाह ये भी आपको डॉक्टर सादिया से डिस्पैच कर देंगी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर जनवरी में आपसे वेबिनार में मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। बस थैंक यू। Thank you, sir.